डेडलाइंस है या एग्जाम्स है या फिर इंटरव्यूज होंगे किसी के. So now I would want you to be in this session for the next 15 to 20 minutes. मैं भी आपके जैसे इसी सेशन में था and some person came in my college, delivered some meditation के sessions and my life is not the same with that session aspect. उसके बाद मेरी life पूरी change हो गई. So now I would request you to close your eyes and listen to this sound so that we are mindful in the session. Will you do that for me? Yes, sir. Okay. So now you can close your eyes and pay attention to your breath. If you are having a shallow breath or a deep breath, and listen to the different sounds that you are experiencing. Now you can open your eyes and my request would be कि आप internally बात ना करें for the next 20 minutes. That's only my request. Can be open-minded for this session. Can you do that for me? Great. So I would want you to be in this inquiry throughout this session. अभी के जो sounds या breathing या अलग-अलग तरीके के sensations जो experience किए, who was experiencing that? Was it the body? Was it the mind? Was it the energy? Was it the consciousness? हमारे इंडिया में एक कल्चर ही था या कल्चर है कि सब सोल है, आत्मा है, but have you really experienced that state of consciousness? So I have been going through my spiritual transformation over the course of time, but now as the future generation, I would want you to see these reports. This is the reality that we are facing. Being into the tech world, being into the digital world, being into the hustle and bustle, basically a tier 1 city, people are going through stress and anxiety. आपसे कोई आप in the audience, are you going through that? Stress है, anxiety है, clinical depression होता है, lonely feel होता है. Yes or no? Yes. And if we do not tackle these situations, how are we going to work on our clarity and purpose of life? And the soft skills, maybe the career skills, the hard skills, the soft skills, which all the experts spoke about. So ये कुछ facts है जो real है. And if we change certain aspects and certain vibrations, many things can happen. And this is the world we are living into, the dark side of technology. Basically, आप ही देखो कि ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, it can be any kind of technology. स्क्रीन टाइम बढ़ता है, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज होते हैं, सर्कैडियन रिदम हमारा चेंज होता है, द बायोलॉजिकल क्लॉक दैट वी हैव. और आप बताइए, कैन समवन फ्रॉम द ऑडियंस शेयर, if we are spending too much time on social media, on the technology, what different patterns have you observed, different behaviors? Mental health, absolutely. What about emotions? Emotions पे control ही नहीं होता. Being short tempered, absolutely. What else? Comparison, FOMO. अरे मेरे दोस्त तो IIT में है, मैं इधर आ गया. ऐसा है क्या? या फिर वो पार्टी कर रहा है, मैं पार्टी नहीं कर पा रहा. उसको अच्छा करियर मिला या फिर अच्छा जॉब मिला या अच्छा लड़की या लड़का मिला. Yes or no? So we are getting into the aspect of the current society and civilization that we are building on. So my fundamental question is, what kind of consciousness we want to contribute to? So ये दुनिया में ऐसा हो रहा है कि हम बहुत pretend कर रहे हैं. Yes or no? But if we change certain frequencies, there is a possibility कि हम authentic रह के, if we work towards compassionate frequencies, our career can be enhanced. And that aspect of understanding spiritual technology has enabled me to work more on the digital technology and to integrate mindful spaces in the digital technology. Would you want to know that? कि कैसे मैं मेटावर्स में या फिर हमारे यूजर एक्सपीरियंसेस में इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ. But before that, I would like to share this
दिस इंक्वायरी, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं एक दूसरे को. इफ आई आस्क एनीवन इन द ऑडियंस कि आप कौन हो, आप क्या जवाब दोगे? कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं ये एजुकेशन गो थ्रू कर रहा हूँ. बट दीज आर ऑल सरफेस लेवल थिंग्स. यस और नो? बट व्हाट अबाउट गेटिंग इनटू अ डीपर एस्पेक्ट? अभी क्या हो रहा है, हम कंफ्यूज्ड वे ऑफ लिविंग में है. Recently I spoke at NIT Trichy, and even the second year and third year students being at such a brand equity या फिर इतना अच्छा कॉलेज के साथ भी वो यही क्वेश्चंस बोल रहे थे कि मुझे करियर में क्लैरिटी नहीं है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ. So do we go through this kind of frequencies and emotions also? कि एक जन बोल रहा है कि ऐसा करो, एक जन बोल रहा है वैसे करो, अल्टीमेटली पता ही नहीं क्या करना है लाइफ में. And this I have been able to see since the last 7 years, right from the age of 15 to the age of 100. डेथ बेड पे भी जो लोग हैं वो भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि वो कौन है. But I've been lucky enough to get few masters and few gurus who have enabled me to see and go with it. So अभी हमारे systems haywire है because of the excessive use of technology, but we can change that. As the new Gen Z and the millennials, we can change that. We have the power. मगर ये power सबके साथ है. There is a hope and faith. So now let's understand. And before that, do I have permission to share a few words about me here and there? So well, I used to be a DJ like this, and I used to sleep in colleges and like sessions अभी जो हो रहे हैं पीछे बैठ के मैं सोता था. And मेरे टीचर्स के साथ जमती नहीं थी. So यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने कैप्शन लिखा है, जाने वाले को कौन रोक सकता है. So I spent my college days pursuing my DJing, pursuing my music, and some things didn't happen. मैं डिप्रेशन में चला गया, हैबिट्स में चला गया, and that lows of life gave me a new perspective कि लाइफ में सिर्फ पैसे ही कमाने हैं और यही करते रहना. So something transformed, and that is why I'm here. मैं 5 लोगों के सामने भी बोलने के लिए मुझे डरना पड़ता था या फिर प्रिटेंड कर रहा था मैं. So some things changed. And now I'm into the world of technology, but from a marketing and communications perspective. So I call myself as a mindful marketer, and I'm on a mission to change brands, change their voice and sound of the brand. And I've been working with multiple companies, Fortune companies, to change their company culture and health and wellness. तो ये सारा चीज़ है. And I used to be a DJ before. Now I'm into sounds of silence. So किसी को यहाँ पे साउंड मेडिटेशन एक्सपीरियंस करना है राइट नाउ? ग्रेट. एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन चेक माय TEDx टॉक. So definitely it's a worth a watch, I believe so. And that's few of my journey here and there. And I've been able to launch India's first sound meditation metaverse. तो जो आज हम साउंड ट्रैक एक्सपीरियंस करेंगे, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. It's free of cost in the metaverse. So now let's go and understand directly कि consciousness का nature क्या है. Let's decode it in our terms and experience the sound meditation. Yeah. So there is the mind which we have, which is the software of energy and matter, and there is the body that we have, which is the hardware of energy and matter. But there is the consciousness which we can elevate our frequencies to, and that is why we are going to experience some kind of meditation and see how we can integrate that in the digital technology. So now let's go into the aspect. ये क्वेश्चन आपको फंडामेंटल फाउंडेशनल क्वेश्चन है. आप किसी भी करियर लाइन में जाइए कि आपको यूटोपिया क्रिएट करना है, डिस्टोपिया क्रिएट करना है. सो व्हाट इट बी फॉर यू गाइस? किस तरीके का यूटोपिया, राइट? यहाँ पे कोई डिस्टोपियन नेचर वाला नहीं है ना? ओके, ग्रेट. सो लेट्स go to the meditation itself. So now I would want you to, wherever you are, be relaxed, and you can slowly close your eyes. आपने जिन्होंने बैग वगैरह पकड़ के रखा है, आप नीचे रख सकते हो बैग आपके. हम सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. And you can slowly and gradually close your eyes. बस यही तो चाहिए था. हम तो पीछे जा रहे हैं. मैं तो जाऊँगी. Now you simply listen to the sounds that you are experiencing. और कुछ नहीं करना है. And my request would be कि कभी-कभी कॉलेज के सेशंस में ऐसे होता है कि
मेडिटेशन या योगा को थोड़ा फन वे में लोग लेते हैं, बट माई रिक्वेस्ट वुड बी अगर आपको ऐसा कॉमेडी वगैरह करना है तो पीछे बहुत ब्लैंक स्पेसेस है, क्योंकि हमारी वजह से औरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए. दैट्स ओनली माई इंटेंशन. सो नाउ you can slowly and gradually close your eyes and take 3 deep breaths and allow yourself to simply relax.
Now, you can slowly and gradually come back to normal consciousness. आंखें ना खोले, do not open the eyes unless I say so. And simply allow the different vibrations जो आप experience कर रहे हो. And simply notice the deep sounds. Maybe you are in a deep state, meditative state. And now you can slowly and gradually open your eyes, and even after opening the eyes, do not talk with each other. That's my request. And even after opening the eyes, keep on sensing the different sounds you have experienced कर रहे हो. So how was it? Can someone share? Could someone go into a deep state of trance and meditation? कौन कौन no thinking के state में जा पाया? Very rare, right? Going into a very deep state and no thinking zone. And that's very possible each and every moment. I'm experiencing this internally. कि no state of no thinking के state में जाना. So how do we do this in the metaverse? Well, so I have launched this meditation का जो metaverse है, आप एक बार यहाँ पे देख लेना, अलग-अलग rooms है, basically. So this is like an experience room, and I have created a knowledge section like a museum experience, जहाँ पे आप अलग-अलग sections आप explore कर सकते हो कि कैसे sound, कैसे yogic science, कैसे spiritual science, technology, marketing और management से connected है. So different sounds can give different experiences. So मुझे sound का medium मिला. शायद से आपको कुछ आपके कार्मिक डेस्टिनी से अलग आपको मीडियम मिल सकता है, शायद से लाइट मिल सकता है, टच मिल सकता है. So different sensations can give you different experiences and different openings in your life, जो आप आपके टेक्नोलॉजी या करियर या आपके लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हो. So that's a simple concept. And how do we do this basically? I'll just skim through because of the shortage of time. Well, it's all about आप मेरा TEDx talk देखोगे तो ये सारा रिसर्च आपको मिल जाएगा उसमें. So how do we do this technically? Integrate कैसे करेंगे हम? By understanding the synchronicity कि consciousness हमारा रिफ्लेक्शन ही है टेक्नोलॉजी का. मतलब कि अगर हम fear से गुजरते हैं तो what kind of products we would create? Fearful. Yes or no? But if we have compassionate nature, if we have more clarity and more aspect कि human experience or human growth is important rather than the monetization. Monetization will come of course, but उसमें हम humanity को ना छोड़ें. Yes or no? Does this message resonate with you all? So how do we enable that kind of human greatness in our community and in the audience? Because we're about community.